on 19th of October, and we will be discussing that paper. And okay, so first of all, I would like to have some review from the students. How how they like the paper, what are their expectations were there, and how they find the questions. You can see the screen. My screen is visible to you people. Yes, sir. Screen is visible, sir. Visible, right? So this is our first test, and we at IQRA is we have started this test, mains test series, first time, okay, before prelims. And since many of you know how we have designed that particular test series, the first thing is this, how we have designed that. This is one thing. Second is you need to understand why we have framed a question in such a way. Okay, so if you see the mains paper this year itself in 2022, you will find a range of questions. There is a range of questions is there. Like there is a basic question, then there is some advanced question, then there's some complex question, then there's an intermediary question. Okay. So in the test series, we have planned a test series for a whole, 8-9 month or approximately 10-11 month test series is there. And we don't want, in this test series, we don't want you that you prepare the test series and you come and you give the test series and you should not be having any idea about it, what actually you are doing as such. Okay. So I will be sharing once again the screen. It gets. So if you see our test series in the screen I have shared, you see we have written part 1, that is fundamental level. Now if you see the question of this level, the range of the question or the complexity of the question, if you see it, we have kept it very basic. Now we have completely divided the test series into 4 different level. This is the part 1 level and the part B, then part C, then part D level. In the part A level and the part B level, this will be completed before the prelims, like I have already discussed in my previous interaction session. So what we have done in this particular test series is, this first test, we have kept the question at the very basic level. And at the many places, what I have seen while evaluating your papers, what I have seen is the people are not, they're not even prepared for the basic part. There is only one student so far I have got. She has written all the 20 questions. This is one thing. None of the student has crossed the 10 question, the barrier 10, 11, 12 question. 15 question तो बहुत ही hardly लोगों ने touch किया है. मतलब बहुत hard, it's a rare. Out of approximately I have made around 30-35 papers in totality so far. And very hardly I have seen that the people has able to complete that particular paper. And that is one basic problem that we have seen. Okay. So you need to work on your basic. That is the reason we have kept. We would have made a very complex paper also, but that not give you the real insight of your preparation. You're getting my point, all of you. So to give a real interaction or real essence to your preparation, a real check to your paper, this one, your preparation, we have deliberately done this. Okay, we have deliberately done this so that by the time of the prelim, let the student prepare only the basic part, the basic, the requirement, and then we'll move to the intermediate level, then we'll move to the advanced level, then we'll move to the mock test, where the actual testing is done for the students. All right, you're getting my point. So we'll go to the question, and I'll tell you this question is complex, this question is straightforward. What kind of a question is this? You should be discussing accordingly. Along with this also, here itself, before beginning with the question discussion, I would like to bring one thing to your notice, to all those students who are written the test, who are about to write the test. All of them, we have prepared a very different kind of a model answer. ये कोई ordinary model answer हमने नहीं बनाया.
अगर उस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उस टॉपिक पे हमने जो मॉडल आंसर आपको बना के दिया है, अगर आप उतना ही मॉडल आंसर उस टॉपिक के लिए उतना ही कंटेंट पढ़ के जाकर के भी लिख देंगे एग्जाम में, तो इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू यू। ठीक है, हमने उस तरीके से उस मॉडल आंसर, जनरली होता कैसा है कि मॉडल आंसर, when you ask the model answer to other any institute as such, generally they give a long list of content and they say read, go and read and find out the answer from this content. You have to write an answer of 150 words, and what is happening in 150 words, they are giving 500 words, 600 words, 800 words content, and they are asking you to read and write. In this part, we have not done that in our model answer. If you have seen our model answer that have been uploaded for paper 1, paper 2, both the paper model answer has been uploaded on time. The very same day at the late night, we are uploading the paper. Okay, and we are doing that, and we have prepared that model answer in such a way that if this question is for to the answer is to be written in 150 words or 250 words, we have extended it to 180 or 200 word at the max for 150 words, so that if there is a little variation, you can come up with the 150 words can be written from that. In 250 words answer, we have given the content of 300 words. And that is justified. You cannot exactly expect 150 word का सर आंसर नहीं दिया आपने, 250 वर्ड का सर एग्जैक्टली आंसर नहीं दिया. ये स्पून फीडिंग अगर आपको चाहिए तो you should be stay in the school and the colleges, not in the competitive exam, and precisely not in this area, not in the area of the UPSC or the PCS examination. Okay, तो थोड़ा वर्क आपको भी करना होता है. We consider you're writing a mains paper, we consider that you have little bit intelligence in yourself. Okay? That is one. Okay, you're getting my point. So this is what we actually. So this is what we actually do. So basically, you should be. Sir, where are the model answer? Abhimanyu, model answer has been uploaded on your dashboard itself. Please go and check. The model answer is being uploaded. दोनों ही उसका मॉडल आंसर हमने अपलोड किया है. टेस्ट 1 का भी अपलोड कर दिया है, टेस्ट 2 का भी ऑलरेडी अपलोडेड है. आप प्लीज चेक कर लीजिए वहां पे अपने डैशबोर्ड पे. ठीक है. Now we'll go to the question to question and we'll discuss. देखो सारा क्वेश्चन briefly या I'll give you the outline and I will show you. एक मॉडल आंसर मैं दिखा भी दूंगा आपको according to that कि आपको दिखेगा कि हमने किस हिसाब से हमने उसे अरेंज किया है. ठीक है. Okay, so I'm just sharing the screen with you people. Just give me a minute and I'll share the screen. Okay. Now all of you tell me, is it screen visible to all? Is it visible to all? UD sir, I think screen is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if you see, this is our model answer. Okay, this is our model answer. Now you see this. Now, this is our first question. So, there are too many tabs are open. Okay, so this is our first question. It's a very straightforward question that is given to you. It's a very straightforward question. You have to discuss. There are two questions within one question. What are the different type of rock and their formation and distribution across India? First part, the first part of the question discusses about the different type of rock. Okay. And the second part of the question, you have to now precisely discuss the distribution of such rock in India. So in this question, the physical geography and the Indian geography, we have asked both the thing in one.
in one question itself. Okay. So whenever you find two questions in one question itself, okay, whenever you do that, first try to understand does not means that you should be writing 50% rock type and 50% distribution across India. जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें. डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो पूछा गया है उसका रेंज कितना बड़ा है. अगर मैं पार्ट 1 को देखूं, क्वेश्चन 1 में पार्ट 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, explain their formation and distribution across India. So different type of rock has a huge component that can be written in the answer. Okay, I will show it to you also. And the formation and distribution we have to discuss across them. That means a broader area they are demanding. So if you able to write 70% of the content in the first part of the question and 30% of the content in the second part of the question, your answer will be addressed. Okay, the required demand of the question will be addressed by this. Okay, you're getting my point. So let's see what we have in the. Okay. So what we have in this. सर थोड़ा जूम कर लीजिए और 125 या 150. I'm जी sorry. I'm sorry. Sir, अभी ठीक है, I guess. Sir, is it visible? Students, this is visible to you all now, this screen. Okay. So you see, in the introduction part, what you have to write is we will discuss about. You have to discuss about. सबसे पहला ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमेशा यू ट्राई अनलेस बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल. तो व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू शुड बिगिन योर क्वेश्चन डायरेक्टली बाय डेफिनेशन. आप अपना क्वेश्चन डेफिनेशन से डायरेक्टली बिगिन कर सकते हैं. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन एनालिटिकल नहीं बना हुआ है. अगर क्वेश्चन एनालिटिकल बना है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हल्का सा सेल, तो आपका जो डेफिनेशन है और जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड पैरा आता है. आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का क्रक्स क्या है. ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सिंपली राइट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक एंड वी नो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक. आपके जियोमॉर्फोलॉजी का ये टॉपिक है और बहुत ही इनिशियली आप इसे पढ़ते हैं. जब हम अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते हैं, जब अर्थ को पढ़ना चालू करते हैं, तो हमारे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है. ठीक है, बेसिक हम इसी से ही एक्चुअली ज्योग्राफी बिगिन करते हैं. ठीक है, सेडिमेंट्री में आपको बताना है. अब इसके लिखने के 2 तरीके थे आपके पास में. या तो आप पूरा क्वेश्चन पार्ट 1 को पहले एड्रेस कर देते और पार्ट 2 को लिख सकते थे. ठीक है, यू वुड हैव एड्रेस द पार्ट 1 कंप्लीटली and then you have addressed the part 2 in detail. ठीक है. Now, or what you have done, you might have integrated both the part of the question together. आप दोनों क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके भी लिख सकते थे. ये दोनों फैसिलिटी इस क्वेश्चन में अवेलेबल थी आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन था. तो आपके पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, फिर मैं इसी के साथ में, जैसे कि इसमें हमने अपने क्वेश्चन में, अपने जो मॉडल आंसर में हमने ये बात कही, इग्नियस रॉक हमने बताया, फिर हमने बताया, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन इन हियर, राइट. लेट्स सी, मार्कर इज वर्किंग. यू सी डिस्ट्रीब्यूशन इन हियर. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए. नाउ इफ यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव रिटन within each type of rock itself we have discussed the distribution. Okay, देखो मैं I will not be discussing the content. कंटेंट आपको मॉडल आंसर मिला है तो आपको कंटेंट पता है. मैं बेसिकली ये बताने के लिए ज्यादा डिस्कशन एम्फसाइज करूंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जा सकता था और आपके लिए वो ज्यादा ईज कैसे हो सकता, क्वेश्चन को समझना कैसे था और उसको डिलीवर कैसे करना था. ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट्स को पता है ये क्वेश्चन के बारे में, लेकिन लिखना कैसे है वो एक हमेशा से चैलेंज रहा है हम लोगों को. ठीक है, जनरली मेंस के क्वेश्चन में लिखने का जो डर होता है ना, द फियर ऑफ राइटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल इन द यूपीएससी. एंड वंस यू ओवरकम दैट हर्डल, इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू पीपल. इट्स बिकम टू इजी फॉर यू पीपल, राइट. सो दैट इज बेसिकली, that is the reason this year itself we have given the model answer itself, so that no student should come and discuss about the content of the question.
We are not discussing the content. We are discussing the how we can easily and confidently write the answer. तो इस क्वेश्चन में आपके पास में दो अप्रोच था. पहला, आप पार्ट 1 को पहले पूरा डील कर लेते और फिर उसके बाद में पार्ट 2 को डिस्ट्रीब्यूशन एक मैप के थ्रू, इंडिया का मैप बना के और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कैसा है वो करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने किया भी है वैसे. ठीक है, okay, that you have done, that you might have done, and that will be beneficial. Or you might have included in each type the distribution itself. This both the way you can address the question and you might have get the good mark. ठीक है, इससे ज्यादा इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था. ठीक है, जनरली कंक्लूजन बच्चे अवॉइड कर देते हैं. डायरेक्ट WH टाइप क्वेश्चन होता है जब भी when the question start with W, what, when, where, why and all that, how, WH type question is what students generally skip the conclusion and the introduction. I will insist you from the first test itself, in the second test itself. Now this was done after the 2 tests. So that was a Diwali, so we were not able to accommodate the lectures in between because छुट्टी थी काफी आप लोगों की भी, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का दिवाली खराब हो. आप लोग अच्छे से एंजॉय करें दिवाली. एंजॉय करने के बाद में हम मिलते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन विल स्टार्ट. Mayank, you have a question. Okay. Unmute yourself. Can we? UD sir, we are allowing the unmute right now. Yes, sir. हाँ, Mayank, tell me. Mayank, you have some question? If you want, you can speak, or if you want, you can write the question. I'll address the question. Sir, what, when, how? उसके बता दो. अच्छा, what, when, how? बेसिकली WH टाइप जो क्वेश्चन है, जैसे कि यही क्वेश्चन था. ज्योग्राफी में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया. तो WH टाइप क्वेश्चन है. जनरली यूपीएससी में UPSC generally don't ask such questions, but there are actually. Sir, when will we get the evaluated answers? Yes, it will be provided by today itself or tonight or maximum tomorrow. You're evaluated. Which paper you're talking about? The test 1 will be delivered first because there was a Diwali. So we apologize for that delay. क्योंकि लोग एक वीक का काफी गैप हो गया, सारे evaluators busy थे हमारे, so that got little delayed for that, and it will be delivered today or maximum by tomorrow night. That will be delivered. Okay. And hereafter you will get consistently. सर मेंस के आकाश तिवारी, मेंस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा आप फोकस रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे, मेरे डिस्कशंस पे, और जो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, ओके. सो WH टाइप क्वेश्चन जनरली ज्योग्राफी है एक एरिया जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, और दूसरा एरिया जहाँ इकोनॉमी का कुछ सेक्शन है जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है WH टाइप का क्वेश्चन. और जनरली क्वेश्चन WH टाइप का नहीं आता, लेकिन इस बार 2022 के पेपर में थोड़ा सा अलग हुआ. देयर वाज अ लिटिल स्लाइट डिफरेंस इन द अप्रोच, एंड दैट वाज बेसिकली कि उन्होंने एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, जनरली यूपीएससी का अभी का ट्रेंड ऐसा नहीं रहा है, बट 2022 में ट्रेंड चेंज हुआ. तो अब ये ट्रेंड कुछ साल तक चलेगा, 2-3 साल तक चलेगा, then there will be a sudden change. So we are expecting next time also. So for that reason, we have also imbibed that particular model or that particular strategy in our test series also. So you can see our first question itself. What are different types of rock? Explain. There are 2 questions within the 1 question itself. So generally what happened, people generally, in this case, people generally what they do, they generally avoid such area. So don't do that. You should be assessing that क्वेश्चन का जो पहला पार्ट, अगर क्वेश्चन का कंटेंट कितना लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे पार्ट में कितना कंटेंट जाएगा, उसी हिसाब से जस्टिसली उसे डिलीवर करिए. जरूरी नहीं है कि 50-50% आए. ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं होता है. So this is the first part. Please read the this one. We have all the 3. अगर रॉक आप डिस्कस करते तो आपके लिए एड्रेस हो जाता है ये पार्ट. कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था मैं. WH टाइप क्वेश्चन में
हमेशा आप वो WH टाइप क्वेश्चन है नहीं है डजेंट मैटर, 20 के 20 क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख के आ जाओ। मतलब इस बात से एग्री हो जाओ कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखना ही है। अच्छा, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, देयर इज अ रीजन फॉर दैट सर। हाउ टू टैकल द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन लाइक डिस्कस, कमेंट, एनमरेट, विल डिस्कस दैट पार्ट। ओके, विल डिस्कस दैट पार्ट, डोंट वरी, विद टाइम विल डिस्कस। लेट द पेपर, पॉलिटी का पेपर आने दो, पॉलिटी के पेपर में इस वर्ड्स का ज्यादा यूज है। आप लोग इस वर्ड्स को लेकर के आप लोग परेशान होते हैं, जबकि उससे ज्यादा वर्ड से जो गिवन स्टेटमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? द गिवन स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। यू शुड बी नोइंग दैट एंड यू शुड बी वेरी वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट पार्ट कि वो गिवन स्टेटमेंट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कीवर्ड से बहुत ज्यादा डिफरेंट। कमेंट, डिस्कस इज बोथ द सेम थिंग। critically evaluate, we do critically evaluate, in general we critically evaluate, comment, enumerate, ठीक है, elucidate, simply analyze। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, हल्का सा वेरिएशंस आते हैं आपके आंसर के कंपोनेंट पे। आंसर का जो आपका कंपोनेंट बनता है उसमें हल्का सा वेरिएशन आता है इस सब वर्ड की वजह से। एज सच स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है आपके लिए, ठीक है। So we are discussing about the introduction, the conclusion. Suddenly we get one-to-one question, एक एक करके question थोड़ा सा रुक के पूछो। Then I will allow you people to ask the question. Don't worry. Question answer session के लिए allow करो. Let me complete the part. क्योंकि बीच बीच में break हो रहा है तो it's not getting complete. So you should, you know, एक इस बात को एग्री कर लो कि हाँ मुझे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने आंसर में लिख के आने का, no matter what will happen. It doesn't matter to me. I will write introduction and conclusion. There is a reason. When you write the introduction and the conclusion, what happened in that case? In that case, what happened? It shows your completeness to the topic. एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसने टॉपिक पढ़ा है, कुछ हद तक ठीक ठाक पढ़ा है। हाँ आकाश, आपका जो क्वेश्चन है आई एड्रेस दैट क्वेश्चन बाद में, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कितना मार्क्स मिलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता है आपके टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग का। वो एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस करता है। एक्चुअली एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस करता है जब आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, तो उसे पता चलता है कि इस बच्चे ने पढ़ा है। हो सकता है कि बॉडी का कंटेंट कुछ कम हो सकता है, लेकिन इसे पता है कि इसने पढ़ा है, ठीक है। यू कैन नॉट कंक्लूड समथिंग बाय रीडिंग वेगली। आप वेगली रीड करके कोई चीज जो है कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आपको चीजों को कुछ हद तक के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। इफ आई आस्क यू टू कंक्लूड अबाउट प्रेसिडेंट, इफ यू हैव रेड प्रेसिडेंट इन सर्टन लेवल तक के आपने पढ़ा होगा उसे, तो आप उसे इजीली कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, पोजिशनिंग प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, दैट यू कैन कंक्लूड इन सच, क्योंकि आपने पढ़ा है वो चीज, राइट। तो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस कंक्लूजन से आती है, ठीक है। और वो एग्जामिनर को और इवेल्युएटर को, पेपर इवेल्युएटर बहुत इंप्रेस करता है वो चीज। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल पार्ट दैट यू शुड फोकस ऑन, ठीक है। भाई एग्जामिनर को इंप्रेस भी करना है, तभी मार्क्स मिलेगा। इट्स लाइक अ गॉड फॉर यू राइट नाउ, राइट। उसके सिवा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वे वी हैव कंक्लूडेड, इफ यू सी द वे वी हैव कंक्लूडेड, rock plays a very vital role in our sustenance. They are the source of various minerals, source of soil, as well as make various landforms. Therefore, the study of the rock are of vital importance for us. We simply conclude it. पर मैंने कई इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी। वेरी वेरी एसेंशियल रोल हमारे सस्टेनेंस के लिए पहला, मिनरल के लिए दूसरा, लैंडफॉर्म के लिए तीसरा, और इसी के लिए इसका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। हमें पता है हर मिनरल का, मेजर मिनरल का सोर्स और हर मिनरल का सोर्स रॉक ही है, एंड योर सस्टेनेंस इज डिपेंडेंट ऑन द मिनरल्स, विटामिन्स एंड ऑल दैट। और वो मिलेगा कैसे? मिलेगा ही रॉक से। यू गेट अ फील्ड, तो जो फील्ड सॉइल आया है वो आया ही रॉक से है ना।
Getting my point? So this is, although generally people, many students have never concluded in this question. Why? You might have concluded in this way. आप ऐसे conclude कर सकते थे इसको, ठीक है? Now, second question. Highlight the mechanism behind the occurrence of earthquake around the world. This is one single question. आपको highlight करने का है एक mechanism जो occurred हुआ है of the earthquake around the world. आपको mechanism highlight करना है. तो आपको introduction में you can start by briefly mentioning about the earthquake. What is earthquake? Definition लिखना है आपको. Simple. Definition is that the shaking of the earth, sudden shaking of the earth due to the huge release of energy which generates the waves that travels in all the directions. That is an earthquake. Mechanism इसके अलग है. That will be discussed in the body part. अगर कैसे होता है? There are various mechanisms. Circum-Pacific seismic belt है. Earthquake occurrence, पहले occurrence क्वेश्चन का पार्ट है एक occurrence. तो कहाँ पे occur होता है? Circum-Pacific belt है, हमें पता है वो डायग्राम, ठीक है? पैसिफिक वाला डायग्राम जो है, ओके. मिड अटलांटिक रीच में भी कर सकते हैं. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी है, ठीक है? हिमालयन, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक वाला है, ठीक है. 17% अर्थक्वेक जो है वो वहीं पे आता है. फिर बाद में अगर मैकेनिज्म की हम बात करें, ये आपका सर्कम पैसिफिक है. यू कैन सी दिस इज सर्कम पैसिफिक. ये मैप, जनरली आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं. मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, इसमें मैकेनिज्म बिहाइंड अकरेंस ऑफ सर्कम. व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट कैन बी फाउंड इन द अर्थक्वेक के अकरेंस. तो प्लेट टेक्टोनिक उसका एक पार्ट है, सुनामी एक पार्ट है, दैट यू कैन डिस्कस इन द क्वेश्चन. 2 से 3 पॉइंट आपको डिस्कस करना, ज्यादा भी नहीं. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी है, ठीक है. लैंडस्लाइड्स है, आप डिस्कस करें. ये मॉडल आंसर अपडेटेड नहीं है, दूसरा वाला अपडेटेड है. लेट मी वेट अ मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. आई विल शेयर विथ यू स्क्रीन वंस मोर. आनंद, ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली आंसर लिखने के बाद उसके एक फोटोज लेने हैं, जैसे कागज़ या कैम स्कैनर एप्लीकेशन है. एंड वो जो टेस्ट सीरीज वाले, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, एक बार रजिस्टर कर लिया है आपने, तो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं. इट विल डायरेक्टली गो टू द सर. ठीक है. Sir, is it visible? The screen is visible to all? Yes, sir. Okay. So now you see, this is the one part that we were discussing. Now geographical phenomena that is influenced by the earthquake, और phenomena जो भी influence करता है, सुनामी है, avalanches है, flood है, ठीक है. इसमें various type of waves that we are discussing. This is an additional part that you can discuss in the answer.
अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज दिस मैप. अच्छा, अब यहाँ तक के तो चीजें ठीक थी. अगर आपको एडिशनल मार्क्स चाहिए विच कैन वी कैन स्लाइटली गिव सर्टेन आइडिया. तो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन उसने क्वेश्चन में इंडिया नहीं पूछा है, उसने वर्ल्ड में पूछा. अगर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, अगर आप मान लो कि इट इज 150 वर्ड्स क्वेश्चन, तो इफ यू गिव अ लिटिल लिबर्टी टू योरसेल्फ एंड प्रोवाइड 20 वर्ड्स का, अगर आप इंडिया का जोनल डिस्ट्रीब्यूशन दे दे कि इंडिया में आपको का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, थोड़ा सा आंसर को अपने इंडोसेंट्रिक कर दें. इंडोसेंट्रिक नहीं, इंडिया का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर दें. क्वेश्चन वर्ल्ड सेंट्रिक ही है आपका. आपका क्वेश्चन नहीं बदला है, ना ही आंसर का कंटेंट बदला है. आपने क्या किया, सिर्फ इंडिया वाला कंटेंट आपने ऐड कर दिया अपने आंसर. अब ये क्या हो गया, ये एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेस कर दिया कि हाँ ठीक है, इसने बाकी चीजें लिखी है तो थोड़ा सा इंडिया का पार्ट ऐड किया. बहुत ज्यादा इंडिया का मत लिखिए. 10-15%, 20% एट द मार्क्स कि आपने इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक बता दिया कि भाई इतना जोन है, जोन 3, 4, जोन 2, 3, 4, 5 है. ठीक है, कहाँ का हिमालयन रीजन है. ठीक है, बाद में डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पे अर्थक्वेक का कोई जोन, स्टेबल बेल्ट है, कहाँ पे कितना कितना है. ठीक है, तो अब इतना नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आपने बता दिया, डायग्राम में ही बता दिया आपने, जोन करके दिखा दिया, देखो ऐसा है. दैट यू कैन डू. दैट लिबर्टी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. वो हमेशा अप्रिशिएट की जाती है. सो यू शुड यूज सच लिबर्टी. जैसे कि ये मैप आपने बना दिया, गिवन द मैप ऑल्सो. फिर बाद में इवेंचुअली आपने कंक्लूड कर दिया अर्थ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना व्हिच इंपैक्ट द ह्यूमन लाइफ. To a great extent, they can be disasters which can lead to a loss of precious life and property as such. Therefore, we need to understand the mechanism of the earthquake to better manage our habitation. Now, this is a very wonderful conclusion somebody can give, and very thoughtful conclusion as such. Okay. Now, question number 3. Now, again, we have two questions within one question. What are the major landform that is created by avalanches? आई थिंक ये स्क्रीन ज्यादा अच्छी है कि पूरा ही विजिबल है आपको. मेजर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय वॉल्केनो. दिस इज अ वॉल्केनो बेसिस क्वेश्चन. आपको वॉल्केनो पे कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना आंसर देना पड़ेगा. सर वॉइस इज नॉट क्लियर. इज इट सो? आपका शायद आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक करिए अपना. यूडी सर, वॉइस के साथ में कोई इशू है? सर अगर हेडफोन्स अगर यूज कर लेंगे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा सर. हेडफोन्स के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हेडफोन एक्चुअली नहीं है, मैं थोड़ा क्लोज आ जाता हूँ जाके, थोड़ा और ज्यादा. और एक ऑप्शन है सर, उसमें ऑडियो में एक सेटिंग होती है जिसमें मेरे पास बैकग्राउंड वॉइस को कम करने का, कभी कभी वो जब एक्टिवेट होता है ना तभी भी वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है जूम में. अच्छा अच्छा, जस्ट गिव मी वन सेकंड. श्योर सर. सर अभी वॉइस कैसा है सर? इज इट फाइन? बेटर है सर, बेटर. काफी बेटर है. जी जी जी. आई स्विच्ड ऑफ द फैन तो अच्छा, उसकी वजह ओके से ओके. उसकी वजह से थोड़ा सा इशू था. बट आई थिंक स्टूडेंट्स, इज इट नाउ, इज इट कंफर्टेबल विद यू पीपल? वॉइस इज क्लियर नाउ? ठीक, चलो विल स्टार्ट. ओके. What are the major landform created by volcano? This is a volcano centric question. Explicitly volcano based question है. आपको suitable example देना. बहुत straight forward question. कुछ नहीं करना है आपको. इंट्रोडक्शन में वॉल्केनो के बारे में बताना है. व्हाट यू हैव टू डिफाइन वॉल्केनो. तो जनरली मैं हमेशा कहता हूँ अपनी क्लास में कि व्हेनेवर यू मीट समथिंग, जब भी आप वॉल्केनो पढ़े, अर्थक्वेक पढ़े, सुनामी पढ़े, उसका एक डेफिनेशन लिख ले अपने पास. You just write the definition with you and memorize that definition. The best thing is to memorize it because it is going to work like a wonder for you people. अब यहाँ पे वॉल्केनो पे क्वेश्चन आ गया, अगर आपने वॉल्केनो का डेफिनेशन रटा होता या याद होता तो जनरली लिख देते. ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा टेक्निकल भी हो सकता है, कुछ आपने बनाया होगा अपने से. तो आपके नोट्स में वो वॉल्केनो का डेफिनेशन होता, पिछली बार में अर्थक्वेक का डेफिनेशन होता, रॉक का डेफिनेशन होता. अब जनरली लिख के खाली चले आते. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यू. ठीक है, वो आपके लिए बहुत बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है.
यू कैन स्टार्ट विद द वॉल्केनो, फिर उसके बाद में आप जनरली मूव करते हैं अपने आंसर में कि किस तरीके का लैंडफॉर्म बनाता है। तो वी ऑल नो वॉल्केनो जनरली हम पढ़ते हैं दो तरीके का। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, वो हम दोनों ही जानते हैं। उस दोनों को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। उसके लिए डायग्राम भी है, ये देखिए, है ना। ये डायग्राम जनरली हम अपने नोट्स में बनाते हैं, ठीक है। बैथोलिथ कैसा होता है, सिल्स कैसे होते हैं, डाइक्स कैसे होते हैं, लोगोलिथ कैसा होता है। वी जनरली ड्रॉ दिस डायग्राम। आप भी ऐसे एक डायग्राम बना देते, इट विल बी वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। फिर जनरली ऑल दो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, देन ऑल्सो यू कंक्लूड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन आपके आंसर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं? द लैंड फॉर्म द अर्थ आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी। Solid, liquid, and gaseous material find in their way to the surface from the some deep-seated reservoirs beneath. हम सब जानते हैं कि वोल्केनो का भी अपना एक रोल है पूरे के पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में और हमारी ज्योग्राफी में, हमारी लाइफ में भी उसका रोल है। जब वोल्केनोस आता है तो हमें ये पता होता है कि अभी वो सॉइल को रिच करेगा, क्योंकि नए मिनरल्स ऐड करता है वो, जो अर्थ के बीनीथ से लेके आता है वो, ठीक है। तो वही कंक्लूजन में हमने वही चीज करनी है। रिजर्वायर्स बीनीथ, डीप सीटेड अर्थ रिजर्वायर है वो जो लेके आता है ऊपर की तरफ गैसेस कंपोनेंट, लिक्विड, सॉलिड, नया रॉक्स फॉर्म होना। उस रॉक को सेडिमेंट्री होता है, सेडिमेंट में टर्न होता है, फिर वो रॉक सॉइल में फॉर्म होता है, फिर वो उस पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। गेटिंग? तो दिस ऑल्सो कैन जनरली, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये हमेशा सवाल करते हैं कि सर, वाई इट्स a straightforward question, do we need a conclusion or not? Yes, we do need a conclusion and अब WH क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन वैसा हमें जरूरत नहीं, अब डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं अपना, एंड देन यू कैन मूव एंड कैन कंक्लूड फाइनली। अब जैसे कि आपने एक कंक्लूजन लिखा तो मुझे एज ए एग्जामिनर आई विल वेरी इम्प्रेसिव। ओके, अच्छा, बच्चों को लिटरली समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है वो, और मैंने सवाल क्या पूछा है बच्चे से, एंड दैट इज वेरी गुड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, what do you understand by continental drift theory? Now this is a previous year question. List out some of the evidence used by the Wagner to support his idea of moving continent. तो जनरली ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एवरीवन रीड, रीडिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यू हैव टू रीड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिफोर रीडिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यू कैनॉट रीड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था कि आपको एविडेंसेस, अल्फ्रेड वेजनर के जो एविडेंसेस है वो आपको पूछा है उसने, उसके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इम्प्लाइड पार्ट ये है कि उसमें क्रिटिसिज्म भी था उसका, देयर वाज सर्टेन क्रिटिसिज्म इफ यू सी। तो इन आवर मॉडल आंसर वी हैव गिवन द क्रिटिसिज्म एज वेल। सो यू आप क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, डू नॉट एक्सप्लेन अ लॉट, बट आप एटलीस्ट दो क्रिटिसिज्म लिख के बाहर आए कि एज ए एग्जामिनर मुझे पता होगा, हाँ इसे क्रिटिसिज्म भी पता था। हल्का सा दो क्रिटिसिज्म, नॉट मच, चार लिखने की जरूरत ही नहीं, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, but you have access the liberty to write such one or two criticism at the max, दो criticism minimum और maximum दो ही। आप लिख करके आप बता देते कि yes, most of the theory was based on speculation, inadequate data evidences का, ठीक है। और ग्रेविटी और टाइडल करंट का ये तो सबसे बड़ा एक्चुअली क्रिटिसिज्म है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं होता है कि वो इतने ह्यूज मास को खींच के लेके चला जाए, ड्रिफ्ट अपार्ट कर दे, ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जनरली अगर आप दो भी क्रिटिसिज्म लिख देते तो वो आंसर एड्रेस हो जाता है ज्यादा अच्छे से, कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस। तो इसमें ये पार्ट जो है हिडन पार्ट था क्वेश्चन के अंदर। नो, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन इज डिफरेंट। इट्स बेटर you conclude something the way we have concluded. Continental drift theory has been an important initial ground for the study of the formation of various landforms, especially the grouping of the continent, mountain, etc. Though it was later refuted, nevertheless it holds the key in the development of further theory. Continental move करेगा
इसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वालों को तो बताने वाले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाले हैं। अल्फ्रेड ब्रेजनर ने ही बताया कि कॉन्टिनेंट मूव कर सकता है, तब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले समझे अच्छा मूव कर सकता है तो उसके नीचे लिक्विड है, एस्थिनोस्फीयर पे रखा हुआ है वो। लेकिन इनिशिएटिंग स्टडी तो उन्हीं की है ना वो। एंड दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इन दिस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ थियरीज, लाइक इसके आगे ऐड कर सकते थे हम लोग, लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सिंपल, so comprehensively we have addressed the question. You getting my point? Now let's talk about question number 5. Differentiate. It's a very straightforward question. I'm even not going to discuss this question. आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट करो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, इलस्ट्रेट यूजिंग द एप्रोप्रिएट एग्जाम। सिंपल है, डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है पूरे क्वेश्चन। ठीक है, एंड इवेंचुअली लास्ट में कंक्लूड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन and it is often asked in the UPSC, even in the prelims examination and the mains examination. And my suggestion to you people will be, read about coral reef. कोरल रीफ के बारे में आप पढ़िए, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। और हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है कोरल रीफ से रिलेटेड। क्या पूछा हमने? व्हाट आर कोरल रीफ्स? सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन एक पार्ट ये है क्वेश्चन का, लिस्ट आउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द कोरल रीफ। You have to list out the condition that is necessary for the sustenance of the coral reef. Now, there are two part of the there are two part in the question. Now, you tell me, just use your logic, simple common sense को use करिए आप, ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपस में आप खुद से ही करिए, एक कॉमन सेंस यूज करिए। अगर दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, और अगर आप 50-50% वेटेज देंगे, तो क्या लगता है आप व्हाट आर कोरल रीफ में ऊपर 75 वर्ड्स का आप क्या लिखेंगे उसके अंदर? अगर आपको याद है पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा, बताया है ये बात, 75 वर्ड्स में आप क्या लिखेंगे कोरल रीफ्स में? व्हाट आर कोरल रीफ्स, व्हाट यू विल राइट इन 75? द डेफिनेशन विल एड इन 15-20, at the max 25 words में definition will be get ended. You will be able to explain what is coral, what a coral reef. The majority part of the question is the second part of the question. List out the necessary condition for the sustenance of the coral reef. You have to use the maximum words for the second part of the question. This is but obvious. It is but obvious, you can say it. Discuss about the conditions that are necessary for the sustenance of the coral reef. Also briefly discuss about the challenges associated with the coral reef. Yes, this is required. That you have discussed the conditions that is necessary, and you're talking about the challenges what are associated with the coral reef. That you can do. And generally, we have given 4 points. You can use 2 points. अब 2 पॉइंट भी, लेकिन दैट इज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 2 पॉइंट आप लिख सकते थे इसमें। फिजिकल डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द कोस्टल डेवलपमेंट, डिग्रेडिंग क्वेरीज एंड ऑल। सेकंड, बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग हो रही है, कैन ऑल्टर द फूड वेब, ऑल्टरिंग द फूड वेब। ओवर फिशिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इंक्रीज किया जा रहा है, तो ओवर फिशिंग की डिमांड, बहुत डिमांड की फिशिंग की फिश की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो फिशिंग ज्यादा हो रही है, तो जो फूड वेब है उनका पूरा डिस्टर्ब है, उसका कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है क्वालिटी। Getting my point? And then eventually can conclude. Coral reef has an exceptional level of biodiversity and provide the important social and the ecological services, including food, coastal protection, recreation, tourism, etc. There's more emphasis should be given to that. Very optimistic conclusion. Despite there are certain challenges, we are still optimistic in our conclusion that things will be better in future. Getting my
let's talk about question number 7. What are the regions prone to flood in India? This is a very interesting question. ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा, actually I personally find it very good. What are the reasons prone to floods in India? We have to list the reasons. Explain the benefit associated with the flood. Now we are talking about the benefit associated with the flood. Generally, we talk about the challenges associated with the flood. We hardly talk about the benefit that is we are getting from the flood. So how will you address such question? The very first beginning. What do you understand by the meaning of by the word flood? Flood का मतलब क्या है? I need a definition of that you can use, or you can begin from that word, or you can begin directly by the you can begin by the data, providing certain data from certain institution. We have given the geographical survey of India. It doesn't mean that this is the only you should be providing it. No, you can use any data, any authentic data. Better to use government data or some international institution. International institution, like not a private institution, but some IMF, WTO, IMF, World Bank का data, UN का data कोई तो बहुत रेप्यूटेड एनजीओ है, उसका डेटा आप यूज करना चाहते हैं, इफ यू एबल टू रिकॉल इट, देन यू कैन यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, so that you can do, right? Well, if you're getting, so I have, there are three options. One, you can use the Indian data, you can use any other institute data, and the third is you can use with, you can begin with the definition itself. The choice is yours. हमने दिया है, इसका मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही हमें चाहिए था. We have outlined the thing. This can be done. इंडिया फ्लड प्रोन एरिया कौन कौन से? ऑलमोस्ट मोस्ट फ्लडेड गंगा ब्रह्मपुत्र इज अ मेजर फ्लडेड एरिया. ठीक है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है. ठीक है, अदर फ्लडेड एरिया जहाँ जहाँ पे जैसे नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सब एरिया कोस्टल, तो सॉरी रिवर बेसिन्स के एरिया, वहाँ पे फ्लड आते हैं. यू कैन यूज द डायग्राम, यू कैन शो इट इन द डायग्राम इटसेल्फ कितने फ्लड होते हैं, दैट यू कैन डू. So first part of the question, what are the regions prone? That we have to outline the region. We have outlined the region. Then we have to talk about the benefits. Now this is implied. This is the main question. The benefit of it. Generally, many people have not addressed this part because generally we read flood in a negative sense. So we don't move to the beneficial part of the flood. Like what flood can do? Flood waters carry nutrients and sediment. ये सबसे बड़ी चीज है. Demolition of flood तो होता है. Ecological trigger करता है. Swamping, माइग्रेशन ऑफ द फिशेस होता है, बहुत सारी चीजें थी. सप्लीमेंट्री लाइवलीहुड है, रिक्रिएशनल इको टूरिज्म आता है उसके बाद में. अब आपने ये पार्ट प्रोवाइड कर दिया, यू हैव टू एड्रेस दिस पार्ट. बट इफ यू हैव रिटन challenges associated with the flood, either you write this part, what are the challenges associated with the flood, this we all know, everyone know what are the challenges, or it's better to write why India is not able to benefit by the floods. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप, you always try to, whenever you write the answer of geography or as such, whenever you're writing a geography answer of geography of world geography, you try to bring India into that, the element of India, why India is not able to benefit by the flood. प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं है नेबरिंग कंट्री के साथ में हमारे, स्टोरेज के लिए, डाइवर्जेंस के लिए, इंटर बेसिन ट्रांसफर नहीं, इंटर वाटर सॉरी इंटर रिवर लिंकिंग हम बना रहे हैं, इंटर लिंकिंग रिवर का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, बट इट विल टेक टाइम. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा अनयूटिलाइज डायरेक्टली ड्रेन इनटू द सी है. तो फ्लड हम यूज नहीं कर पाते, विच कैन यूज इट, राइट. ये हमारे साथ में प्रॉब्लम. एंड देन वी कैन सिंपली, so this part, the flood, why India is not able to benefit with the flood.
Why we are not able to benefit by the, that is very important. Getting me? But now we have talked both the elements. We have talked the distribution in the mains. Okay. In the main part of the question, we have talked the region, about the region which is prone to the flood. We have talked about the benefit associated with the flood. We have briefly outlined in the two-line sentence the problem associated with the flood. And in the last, we have brought this question of physical geography into the Indian context and made the examiner aware, yes, we are not able to benefit by the flood. Although the flood is a beneficial part, we are not taking flood in the negative sense. ये वो implied part है जो required है आपसे. अगर आपको टॉप लिस्ट में आना तो आप 100 की लिस्ट 200 300 400 की लिस्ट, this is the thing that is required. Now we'll move to the another question, or how we concluded. Now that is important part. The flood play a very important role in our ecosystem. One hand, it can be devastating, while on the other hand, it play a very important role in the management of our ecosystem. How positively we have concluded the topic. That is considered as a chaos in India. That reflects, the conclusion reflects your attitude, your personality. That is important. Getting? You should learn this thing. ये सब सीखना है हमको पूरे मेंस के टेस्ट सीरीज पे. You have to learn this thing. Now, question number 8. What are the factors affecting the temperature distribution of ocean factor? It's a simple question. I will not be discussing the question. हमें टेम्परेचर अफेक्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को ओशन के अंदर, तो सिंपली हमें देखना है कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है. लैटिट्यूड है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड है, ओशन करंट है, लोकेशन एंड शेप ऑफ द एरिया है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल. सिंपल है, इसमें वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है ये, रिलेटेड टू ओशनोग्राफी, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Climate change is altering the dynamics of Indian Ocean in multiple ways. Now, this is the analytical question. ये हमने एक क्वेश्चन आपके एनालिटिकल पे डाला, एक दो क्वेश्चन और भी है इसमें, but this we have kept it for the analytical. What the question is, the climate change is altering the dynamics of the Indian Ocean. Now, in general, in the oceanography, we have taken Indian Ocean very precisely as a question. We have taken the Indian Ocean. We have used the Indian Ocean to make our question. In the multiple ways, just see the keyword over here, multiple ways, and we have to discuss it. We don't have to take any stand, any critical argument. कोई stand हमें लेना नहीं, खाली हमें discuss करना है simply कि किस हद तक के ये statement सही है. We don't have to take, we have to just discuss. We have to give the arguments. So in the introduction part, can start by briefly mentioning about the climate. What is climate change? देखो definition ही climate change. The key word in the question is climate change. और सिंपली यू वुड हैव रिटन, जैसे कि मैंने इसमें क्लाइमेट चेंज refers to the long term shift in the temperature and the weather pattern. ठीक है, this shift may be natural, but since 1800 human activity has been the main driver of the climate. So what I have done, I have completely within the two line, within 30 words in the introductory part, I was able to sum up everything about the climate change that should be in general. आपको जो अपना एरिया बनाना है अंडरस्टैंडिंग का, वो हम इससे बना सकते हैं. इंट्रोडक्शन होता क्या है कि रीडर्स को एक एक पेरिफेरल एरिया देना, कि इस एरिया पे मैं बात करूंगा. यू गिव्स द पेरिफेरल एरिया. We are going to talk about this here. And we are giving briefly, we are discussing about the same way. When you will introduce yourself, you will talk about your education,
talk about your achievement, we'll talk about your goals in life. 3 चीजों के बारे में आपसे पूछेगा, आप बताइए, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन है। आपसे कोई ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि आप हर दिन क्या करते हैं, आप पूरे अपने 25 साल का हर दिन का अपना अकाउंट दीजिए मुझे। Nobody is asking you. That's not an introduction. It's a detailed analysis that comes in the body part of it. वो डिटेल एनालिसिस बॉडी पार्ट है। और इंट्रोडक्शन में सिंपल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो हमें सिंपल क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दिया। वह लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर द वेदर पैटर्न होता है। 18 सेंचुरी तक ये नेचुरल होता था। 18 के बाद में ये मेन ड्राइवर जो है वो ह्यूमन इज द मेन। नो they evaluate, they know more than you, but you will get an idea of it. The person, he know how to introduce this. Or you can use the definition of climate change also. There is no problem. How the climate change is altering the dynamics of the Indian Ocean. Marine heat waves है, cyclone है, sorry, marine heat waves है, cyclones है। स्टेप टेकन, दो चीजें इसमें हमने बताई। तो मरीन हीट वेव्स के बारे में हमने बताया, दूसरा हमने साइक्लोन के बारे में बताया। वी आर नोइंग दैट देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द साइक्लोन, शिफ्टिंग हो रही है थोड़ी सी वेस्ट बे बंगाल से इंडियन ओशन, अरेबियन सी की। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड बी डिस्कसिंग इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, इन द आंसर में आपको इसको डिस्कशन करना है। अब इसमें इम्प्लाइड पार्ट ये है कि अगर क्वेश्चन इंडियन ओशन से है तो इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी डायरेक्टली, क्योंकि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में इंडियन गवर्नमेंट। तो स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्या क्या स्टेप लिया है, तो वी हैव रिटन सम स्टेप, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन हमने बना रखे हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोस्टल रेगुलेशन जोन भी है इंडियन ओशन पे। अब इंडिया के अगर आपने स्टेप टेकन बोल दिया तो इंटरनेशनली भी बोल दीजिए, कुछ है 2-3 इनिशिएटिव इंटरनेशनली भी है। नॉर्दर्न यूरोपियन इंक्लोजर डैम्स के बारे में बात हो रही है, 10 सिटी डैम के बारे में बात हो रही है। इंटरनेशनल एफर्ट जो है, ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो इट कैन बी okay, but if you write it will enrich your answer. If you don't write, it's fine, not a problem. Generally उतना याद भी नहीं आता एग्जाम टाइम, ठीक, पर वो कीप ऑन रिवीजन, रिवीजन से याद आता है। मेंस का एक ही रूल है, थंब रूल है मेंस को, मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिवीजन। रिवीजन इज अ थंब रूल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एंड बिलीव मी व्हेन आई से रिवीजन, आई लिटरली मीन रिवीजन। तो मैं तो यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवीजन ही की बात कर रहा हूँ, लिटरली रिवीजन। Then you can conclude the question. Okay. Developing action plan to coordinate between different stakeholders is very crucial. One of the crucial factors in developing adaptation and the mitigation plan is ability to predict such extreme weather events. Simply, you can conclude that. Question number 10. Monsoon in India has undergone several changes over the years, especially on account of climate change. Now, in this question, what we have done, we have clubbed monsoon first, and monsoon in India has undergone several changes over the years, especially climate change के account, climate change के monsoon in India has undergone several changes over the year, especially on the account of climate. अब क्लाइमेट चेंज को मानसून को हमने क्लब कर दिया क्वेश्चन के अंदर, और आपको इलेबोरेट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिटेल इलेबोरेट करके दे देना है। यू कैन डिस्कस अबाउट द मानसून, व्हाट इज मानसून, ठीक है। और मानसून इंडिया अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर देयर, शिफ्ट इन द ट्रैक ऑफ द मानसून सिस्टम आर रिजल्ट फॉर दिस, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मानसून, यू कैन राइट 5 पॉइंट्स। जैसे कि मानसून इंडिया वेदर सिस्टम हैज बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट, तो हमें पता है वो चीजें पहले। ग्लोबल वार्मिंग ने इंक्रीज क्या है, फ्लक्चुएशन इन द मतलब ब्रेक जो होता है मानसून में वो ज्यादा होने लग गया है, ठीक है। मानसून के ड्यूरेशंस में भी डिलेड आए हैं, ठीक, काफी डिलेड हो गए। स्पेल, ड्राई स्पेल बढ़ने लग गए हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई ड्राई, कोई ब्रेक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन हो रहा है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
Train is happening. अब जबकि हमने बात किया कि गवर्नमेंट, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, तो गवर्नमेंट की हमने मानसून की बात की। अब मानसून में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इम्प्लाइड हो जाता है उसके अंदर कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है इस प्रॉब्लम को टैकल करने में। यू राइट 2-3 एग्जाम्पल दैट विल एड्रेस द क्वेश्चन। हमने 5 पॉइंट दिया है, आप 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो इट विल एड्रेस द रिक्वायर्ड कंटेंट क्वेश्चन। Okay. Then you can simply conclude the question. One of the major impact of the climate change is the track of monsoon system can be seen on the Kharif, particularly rice production. Bihar, West Bengal, and UP, which account for the third of the country's total rice production, has been heavily deficit given the account. तो हमने उसको climate production of Kharif crop rice से हमने link किया. Is the question was linked with the rice? No, question was not linked with the rice, but we have generally linked it with the rice. We have done that, but you can change the conclusion. There is no problem. We have given that. Now question number 11. Now from 11, 1 to 100, sorry, 1 to 10 जो question है आपको 10 marks का 250 word, 150 word का question. Actually, this is writing 151. You can say 150 word question is difficult. You know, comprehensively dealing with all the dimensions, because once you start writing something, now you're unable to withdraw yourself from that continuity. What does it mean is when you start writing, keep on writing that. So it's very difficult to withdraw because there is a paucity of words. There is a limitation of the words on you. In the 10 marker question, 150 words, you have to complete the dimensions also. You have to impress the teacher along with that. So you have to talk very straightforward. So you don't get much time or much liberty to express yourself more. It is the way of hit and run. 10 marker question is like hit and run. Don't wait and watch. That you can do from 11 to 20. इसलिए 11 to 20 को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. जनरली बच्चे एक्चुअली 11 to 20 लिखना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली 10 to 1 to 10 लिखना. That's my belief and my opinion. It might change with the students. I cannot totally understand on that. Student might change it, but so far my experience and my knowledge says that it's difficult to write 1 to 10 question, and it's easy to write 1 to 11 to 20 question, 250 words question. Because where you can, if you make certain, suppose एक dimension question में आपने थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, तो you can manage it with the another dimension, और दूसरे पार्ट की क्वेश्चन में आप मैनेज कर सकते हैं. वो लिबर्टी 10 मार्कर वाले में नहीं है. हाँ, दोनों के लिए एक रिक्वायरमेंट है, दोनों ही पार्ट के 10 मार्क का क्वेश्चन 150 वर्ड्स के भी और 250 वर्ड्स, एक रिक्वायरमेंट. और वो रिक्वायरमेंट है कि आप के पास में कंटेंट होना चाहिए लिखने का. विदाउट कंटेंट यू शुड नॉट बी राइटिंग. ओके, विल स्टार्ट द, हम ज्यादा इस पे वाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, इजीली सॉरी, बट विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 11. अर्थ इज नॉट अ सिंगल होमोजेनियस मास. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज अ मल्टीपल लेयर. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. हमने डायरेक्टली आपसे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए नहीं कहा, बट के इनडायरेक्टली आपको बोला है डिस्कस करने के लिए. क्वेश्चन अगर अगर WH टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन बना होता तो सिंपली लिखा था एक्सप्लेन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता, बल्कि इसको उल्टा बोले, अर्थ इज नॉट अ सिंगल होमोजेनियस मास. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज अ मल्टीपल लेयर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वी ऑल नो द आंसर. क्रस्ट, मेंटल, कोर, में डिफरेंस लेयर, ये मैप बना दो, डायग्राम बना दो, तीनों जो भी तीनों लेयर हैं उसको एक्सप्लेन करो, इजीली कंक्लूड करो. बहुत ही इजी क्वेश्चन. इजीली कैन स्कोर 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, 12 मार्क्स. 15 तो नहीं मिलेगा, 12 से ऊपर कभी नहीं मिलेगा. वो दिए बना ही नहीं है देने के लिए. मैथ्स होता, फिर साइंस का कोई पेपर होता तो मिल जाता.
बट आई डोंट थिंक सो कि वो इसी के लिए उसमें उनकी स्केलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना ही नहीं है आपको 15 देने के लिए। वो खाली 15 मार्क्स या 10 मार्क्स दिया है, मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि एग्जैक्टली हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकलेगी, ये कम था, ये लिखना चाहिए। तो इसके लिए जो फिजिक्स वाले, जो साइंस के ऑप्शन के पेपर्स होते हैं या उसके पेपर्स होते हैं, ऑप्शन के मैथ्स के होते हैं, तो उनकी स्केलिंग होती है ताकि उसको जीएस के लेवल पे लाया जाए, तो सॉरी, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लेवल पे लाया जाए उसको। क्योंकि उसने तो, आपने मैथ्स का क्वेश्चन दिया, उसने पूरा सॉल्व कर दिया, अब उसका आंसर भी आ गया, अब उसको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 पूरे नंबर दो, उनको देना पड़ता है, काट नहीं सकते हैं। मैथ्स में क्या काटोगे? देयर इज अ स्टेप, देयर इज अ मार्क्स, you have written all the step, the answer is getting the answer, he or she is getting the answer, then you have to give the marks, there is no alternative as such, right? But that is not the case with the humanity, तो आपको 10 11 मार्क्स 12 तक भी मिल सकते हैं। 12 is 18% mark, 80% marks is quite good. Question number 12, why Bay of Bengal is more likely to experience cyclone than Arabian? जनरली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जनरली क्या है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसी का उल्टा, इसका ही उल्टा है, क्या चीज, जो अभी आपकी यूपीएससी में और जो करंट ट्रेंड है, डिफरेंट इज जो आपका करंट ट्रेंड है वो अरेबियन सी पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरेबियन सी में एनर्जी, अरेबियन सी में जो है ये शिफ्ट कैसे हो रहा है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के हिसाब से बे ऑफ बंगाल में आपका आना चाहिए क्या, बे ऑफ बंगाल में देयर शुड बी द साइक्लोन। तो जनरली हमने हमने इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे बे ऑफ बंगाल में पूछा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, हमने इंडियन ओशन की तरफ, सॉरी अरेबियन सी की तरफ हमने मूव नहीं किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपली बताना, व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द साइक्लोन देन द अरेबियन सी, सिंपल। तो आपको कंडीशंस पता है साइक्लोन के, वर्ड साइक्लोन है, तो यू हैव टू डिफाइन द वर्ड साइक्लोन इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, ब्रीफली डिफाइन व्हाट यू मीन बाय साइक्लोन। तो वर्ड साइक्लोन की वर्ड है, आप प्लीज लिख दीजिए उसको, उसका डेफिनेशन कहीं पे एक जगह लिख करके उसको याद रखिए कि अगर साइक्लोन वर्ड दिखा पूरे वर्ड्स में साइक्लोन का रिलेटेड क्वेश्चन, तो आई विल राइट दिस डेफिनेशन, देन यू मूव टुवर्ड्स the reason for more cyclone in the Bay of Bengal. So there are multiple reasons. There are टेम्परेचर कंडीशन बराबर है वहाँ पे, ठीक है, शैलो वाटर का है, स्पेस बड़ा है वहाँ पे, लैंड भी आ जाता है वहाँ पे, बहुत सारी चीजें दैट वी जनरली रीड इन अवर, जो भी हमारा ज्योग्राफी है उसमें हम पढ़ते हैं कि वह सूटेबल है साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का शेप भी वैसा बना हुआ है कि वो जो है स्ट्रॉम को फोर्स करने में, गेन करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। एयर का मूवमेंट का भी एब्सेंट है वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि बे बंगाल में एक्चुअली वैसा नहीं होता है, ठीक। द एब्सेंस ऑफ एयर मूवमेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टुवर्ड्स द बे बंगाल, जब वो मूव करता है तो एब्सेंट हो जाता है, मोस्ट पोस्ट मानसून फेज है एक्चुअली, ठीक है। व्हेन यू गो विद दिस ITCZ भी जनरली वहीं पे बन जाता है, तो इट्स अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, आप शायद क्या नाम है एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। Then post after writing this, you can briefly write in a very small paragraph, 1 or 2 paragraph में आप इतना बोल दीजिए कि in the recent time because of the climate change we are experiencing some shift of cyclonic activity from the Bay of Bengal to the Arabic Sea, इतना बोलना है आपको। It will enrich your answer. That's so simple to impress the evaluator, evaluator को impress करने के लिए इतना छोटा सा बोलना है। कंक्लूजन में इसमें लिखा है, thus the necessary Arabian Sea system does not, Arabian Sea system does not possess the necessary characteristic to support the cyclonic. Although it may have a low pressure wind, it lacks the power to develop a full-fledged cyclonic activity capable of causing the large-scale destruction that can cause a widespread harm. ठीक है, सब सिंपली हमने बोला, क्वेश्चन उस पे है, कंक्लूड हमने अरेबियन सी कॉन्टेक्स्ट में कर दिया, पर कंक्लूड हमने
हमने कंक्लूड क्या किया? हमने कंक्लूड ही साइक्लोन को किया, साइक्लोन को छोड़ के हमने कंक्लूड नहीं किया कुछ भी। ठीक है, हमने साइक्लोन भी कंक्लूड किया, हमने इम्प्लाइडली वेस्ट बंगाल को भी कंक्लूड किया, और हमने मेजर कंटेंट अपने कंक्लूजन में अरेबियन सी को रखा। हमने वैसे, आप भी कर सकते हैं, आप सिंपली कंक्लूड करते थे जो मैंने आपसे कहा, ऑल द नेसेसरी कंडीशन आर देयर फॉर द बे ऑफ बंगाल, so India is experiencing more cyclonic activity in the Bay of Bengal as compared to the Arabian Sea. Okay, now, so this was about 12th question, straightforward question. Now question number 13, what do you understand by the pedogenesis? ठीक है, pedogenesis की पहले तो एक वर्ड बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आएगा, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सॉइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग द पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस के फैक्टर को हमको एड्रेस करना है। हाउ विल यू स्टार्ट? दिस टू पार्ट क्वेश्चन। हमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेडोजेनेसिस? दिस सिंपल डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है, सॉइल, सॉइल के डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, और लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग द पेडोजेनेसिस, हमें खाली फैक्टर बताना है कि क्या क्या फैक्टर सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं। Because soil is a dynamic medium in which the many chemical, physical, and biological activity goes on constantly. Soil genesis or the pedogenesis is the study of the origin and the formation of the soil. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल, पेरेंटल फैक्टर है, मिनरल है, टोपोग्राफी है, बायोटिक फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, टाइम है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर, हमने 5-6 फैक्टर लिख दिया, 5 फैक्टर लिख दिया। मेजोरिटी लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, शायद उन्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया एक्चुअली। हमने टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बट ठीक है, यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट यूपीएससी माइट sometimes pull such a string that they can give you such, technical word and they can ask something. And if you don't know the technicality of that word, it's very difficult. Okay, it's a straightforward question. Nothing can be. कुछ ज्यादा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, highlight the different stages of the river and explain the major geographical feature associated with each stage. इसमें स्पेसिफिकली बोला है उसने कि डिफरेंट फेजेस ऑफ द रिवर पे बात करनी है, और हर फीचर को, हर मेजर फीचर के जो स्टेज के हैं उसको आपको आपको एक्सप्लेन करना है। तो खुद बोल रहा है सेकंड पार्ट ऑफ दैट, हाईलाइट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिवर, देयर आर 3 स्टेजेस, वी नो दैट, एंड एक्सप्लेन द मेजर ज्योग्राफिकल फीचर एसोसिएटेड विद ईच स्टेज। कितना ज्यादा लिखने के लिए आपके लिए बोला गया है एक ही स्टेज में, एक ही क्वेश्चन में? तो वी नो अपर, वी नो मिडल, वी नो लोअर कोर्स, तीनों में अलग अलग फीचर का फॉर्मेशन है, तीनों में अलग अलग फीचर का फॉर्मेशन है, दैट वी नो। एक बच्चे ने क्या किया, पूरे के पूरे उसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए था पूरा बताने के लिए कि रिवर का स्टेजेस कैसा मूव हुआ है, उसने वर्टिकल बना दिया। सर पता कर लीजिए, व्हाट इज, डोंट यू नो दैट हाउ टू ड्रॉ एंड विच डायग्राम शुड बी ड्रॉन इन विच, आइदर इट शुड बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और शुड बी ड्रॉन वर्टिकली। इतना पता तो होना चाहिए आपको, एटलीस्ट उस पर फोकस, उस पर ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तीनों स्टेज हमें पता है, वी कैन ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, सर ये दिस आर द 3 स्टेजेस। पहला जो है वी शेप वैली बनाता है, ठीक है, वाटरफॉल है, जॉर्ज बनता है, बहुत सारी चीज बनती है, यहाँ मेंढरस बनता है, लेक का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे तीसरे वाले में ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन, फ्लड प्लेन, लिवीज का फॉर्मेशन, डेल्टा बनता है लास्ट में माउथ के पास। डिस्कस ऑल द 3, किसी को एनालाइज नहीं करना है, किसी को क्रिटिकल नहीं है, बताना है आपको तीनों स्टेज में। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन हमने बनाया, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के लिए हम चाहते थे उस पर पूछ सकते थे एट द एंड में कि डेल्टा का क्या रोल है, एस्चुरीज क्या बनती है। वुड हैव आस्क्ड दैट बट वी हैव नॉट डन दैट, वी केप्ट इट वेरी बेसिक। हमने उसको बेसिक तक ही रखा है, तो चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था और सिंपली कंक्लूड करना था, दिस every river based on its course had the varied geographical feature. The knowledge of these geographical features is critical for sustainable development of human aspect of the river. For instance, knowledge of waterfall and the rapids could help in identifying the potential dam site. ठीक है, फ्लड प्लेन के बारे में हमें पता होता तो हम सेटलमेंट को बता सकते हैं कैसे सेटलमेंट हो सकता है यहाँ पे, what kind of settlement is possible at that.
So straightforward question, we have concluded it properly. Now, question number 15. Analyze the threat posed by the climate change on the wetland ecosystem. So this is one part of the question. हमें analyze करना है threat क्या possess कर रहा है इसके ऊपर, climate change का threat wetland system के ऊपर. Second, suggest some corrective measures to conserve the wetland. हमें कुछ corrective measures बताने हैं wetland को conserve करने के लिए. ठीक है, कंजर्व करने के लिए हमें वो बताना है. ठीक है, यू कैन स्टार्ट बाय ब्रीफली डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज वेटलैंड. ये कीवर्ड है, ये ज्योग्राफी के आपके सारे कीवर्ड है. अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, रॉक, वेटलैंड, डेल्टा, यू नो, वी हैव डिस्कस अबाउट कोरल रीफ. ये सब इसे कीवर्ड, ऐसे 50-100 कीवर्ड निकालो एक सब्जेक्ट में से और उसके डेफिनेशन लिख दो. टॉपिक पढ़ते हो ना, रीड अबाउट द वेटलैंड सिस्टम. वेटलैंड सिस्टम को रीड करते हो ना, लिखो उसके बारे में. व्हाट्स द प्रॉब्लम? गेटिंग मी? Suggest some corrective action force to conserve the wetland. Or second part of the question is suggest some corrective measures to conserve the wetland. Okay. So we'll start our answer with the wetland definition. Then we'll try to give certain area, that how much area world surface covered by the wetland. Like I have given in the model, we have given in the model answer 5 to 8%. Now what are the threat posed by the climate change on the wetland? क्या threat है? Threat posed by the climate change on the wetland. पहला, the climate change can influence the wetland ecosystem by increasing the temperature and also by changing the हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेटलैंड से, तो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो. बायोकेमिस्ट्री है बहुत सारी, कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो कंजर्व, कार्बन सिंकिंग का भी काम करता है. डिपोजिशन रेट कम हो जाएगा. अब मेजर क्या, 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर. फिर मेजर्स क्या है? मेजर टू कंजर्व द वेटलैंड, इंक्लूड द वेटलैंड कंजर्विंग वाइज यूज कैसे करें. ठीक है, मेजर्स टू कंजर्व द वेटलैंड. इसमें आपको व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स टू कंजर्व द वेटलैंड. ठीक है, तो करेक्टिव मेजर्स को बताने से पहले आपको थ्रेड बताना पड़ेगा. क्या क्या थ्रेड? तो 2-3 पॉइंट आपने थ्रेड में बता दिए. फिर आपने मेन पार्ट पे आ गया, कंजर्व करने के लिए आपने क्या क्या स्टार्टिंग. इसमें एक चीज इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि वेटलैंड कंजर्व इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है. रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर सकते थे इसके अंदर. इंडिया का बात कर सकते हैं, साइट जो रामसर साइट्स बनाते हैं इंडिया, अब उसके बारे में बात कर सकते थे. अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात कर सकते थे, अब चिल्का लेक के बारे में बात कर सकते थे. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और भी वेटलैंड्स इंक्लूडेड किए हैं अपने इसमें, तो आप उसके बारे में बात कर सकते थे. आउटलाइन दैट इनिशिएटिव. मेजर्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया है, कोई सक्सेस स्टोरी है वेटलैंड को लेकर के? यस, चिल्का लेक इज द बिगेस्ट सक्सेस. ठीक है, दैट यू हैव डन, द माइट डन, दैट विल बी वेरी. And then you finally conclude a comprehensive consideration of the most important wetland services, such as the wetland change mitigation and the water purification, is essential to suitable, such as suggest the suitable and the efficient management of suitable or efficient management of the wetland होना चाहिए. Simply, we're concluding it. We're not using any government scheme की हम बात ही नहीं कर रहे. हम simply dialogue करके इसको conclude हमने discuss किया. ठीक है. Now we'll move to question number 60. One of the most prominent feature of the collision of the two continental plates is the emergence of the mountain. It's a very straightforward question. We're not going to discuss this question. One of the important prominent feature of collision of the two continental plates is the emergence of the mountain. तो हमें पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में ब्रीफली बताएंगे इसके अंदर, और सिंपली आप मूव कर जाएंगे कॉन्टिनेंटल कोलिजन से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. कौन कौन से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं हमको ये पता है. ठीक है, कौन कौन से माउंटेन फॉर्म होते हैं? कोल्ड माउंटेन, सॉल्ट माउंटेन. नहीं है, रीड इट प्रॉपर्ली. किसी को बताना है कोल्ड माउंटेन, कोल्ड माउंटेन, टाइप ऑफ माउंटेन दैट इज वॉल्केनिक, टाइप ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, वॉल्केनिक भी है, कोल्ड भी है. यू हैव डिस्कस अबाउट दिस माउंटेन. जनरली इसमें थोड़ा सा कंटेंट हमने ज्यादा दे रखा है, इतना ज्यादा कंटेंट देने की जरूरत नहीं, बट वी हैव गिवन इट सो दैट यू कैन at one place you will get the all the information of one. So if you want to prepare about the mountains, you can read from here and you can go in the exam. That is one of the objective over a model answer. ये हमारा एक objective है model answer.
You simply read that part from here and you can go and write the paper. Write a good content in the paper. You don't have to, multiple जगह से search करने की आपको जरूरत नहीं. Okay. Now question number 70. List out the major glaciers around the world. This is one part of the question. We have to list. That means we have to outline the glaciers. Major glaciers के बारे में हमें बताना. Also highlight the importance of glaciers for the environment. So glaciers का importance environment के लिए हमें बताना है. We have to outline the glaciers importance for the environment. So simply, what is glacier? Briefly, we'll discuss about the glacier. Massive mass of the ice है, moving sheet है over the land as a linear flow down slope of the mountain. ठीक है. Out of the total water on the earth, 2.1% is in the glacier, while 97.2% is in the ocean in the earth. एक्चुअली फ्रेश वाटर लिखते तो कंटेंट ज्यादा हो जाता है. फ्रेश वाटर का सबसे ज्यादा कंपोनेंट वहां पे ग्लेशियर. मेजर ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड अंटार्कटिक है, ग्रीन, आप ग्रीनलैंड भी बोल सकते थे. स्टैचिन ग्लेशियर के बारे में गंगोत्री. तो दो आप वर्ल्ड के नाम बता सकते थे और दो आप इंडिया के नाम बता सकते थे, या तो आप सारे कॉन्टिनेंट से एक एक ग्लेशियर के नाम, ऑल द कॉन्टिनेंट्स के एक एक ग्लेशियर के नाम आप बता सकते. that you can do. This is the two way that can be addressed while we are discussing about the major glaciers का आपको आउटलाइन करना. सातों कॉन्टिनेंट के एक एक बता दीजिए, या फिर आप दो वर्ल्ड के मेजर बता दीजिए और दो इंडिया के मेजर बता दीजिए, जो भी आपको ठीक है. ठीक है, दैट कैन बी. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर. तो ग्लेशियर के बहुत सारे. सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ वाटर, लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. ओके, बहुत सारे रन ऑफ है, इम्पैक्ट है, पेरिनियल वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. फिर इम्पोर्टेंस क्या है ग्लेशियर का? सेंसिटिव होता है ये, टेम्परेचर के, क्लाइमेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट करता है. जब बहुत जल्दी ये पिघलना चाहे तो क्लाइमेट चेंज भी पता सकता है. फर्टाइल सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप. तो बहुत सारे इसके उपाय. अब जब आपने इसके इम्पोर्टेंस बता दिए, तो आप बताइए कि थ्रेट क्या है ग्लेशियर्स को लेकर. आप ब्रीफली बताइए, 2 पॉइंट ही बताइए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इट डज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये इम्प्लाइड पार्ट है. थ्रेट क्या है? CO2 का थ्रेट है, ओशन वार्मिंग का थ्रेट है, आइस ब्रेकिंग शिप का भी थ्रेट है. ठीक है, तो दो तीन डिफॉरेस्टेशन का थ्रेट है. तो दो ही पॉइंट अगर आप बता पाए थ्रेट, तो दैट आल्सो इज, क्योंकि ये मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है. ये आपको इम्प्रेस, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, इट विल हेल्प यू आउट ऑल्सो. देन यू सिंपली कंक्लूड द क्वेश्चन. ग्लेशियर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द important part of linked global system. They are sentiment of the climate change and are the most visible evidence of the global warming. सबसे ज्यादा विजिबल इन पे ही होता है ग्लोबल वार्मिंग का. ठीक, तो सिंपली यू वुड हैव कंक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में अगर बात करें, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, sorry, I'll read again the question itself. In the context of the formation of the major landform of Earth, explain the plate tectonic theory. We have to discuss the plate tectonic theory. Simply plate tectonic theory में बात करनी है. So we know that plate tectonic theory, divergence, ये सारी चीजें हैं. So I don't need a discussion on this. Plate tectonic theory we all know. The three type of plate boundary: divergence, convergence, transform. तो इसके बारे में बात हो जाएगी. तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप पढ़ते हैं वही. ठीक है, सिंपली कंक्लूजन में हमने क्या किया है इसमें, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर लैंडफॉर्म are formed due to the plate tectonic की वजह से form. New minerals also thrown up from the core with the magnetic eruption से वो होते हैं. ठीक है, हमने ये बताने की कोशिश की. You can choose your conclusion, there is no problem in that. अगर आप अपना conclusion choose करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे भी आपको. Okay. Now we'll move to question number 19 and explain the mechanism of thermohaline circulation. मुझे पता है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं. Please go and read about this question and illustrate the movement of thermohaline circulation across the globe, because this was in the news, that is the reason we have given this question. ठीक है, आपको बताना है कि thermohaline एक्चुअली में है क्या. और दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ thermohaline circulation and illustrate the movement of thermohaline circulation across the globe. Illustrate the movement of thermohaline circulation across the globe. So first is thermohaline circulation, also called Great Ocean Conveyor Belt. Great Ocean is a conveyor belt. It is a component of general oceanic circulation controlled by horizontal difference in the temperature and salinity. Temperature और salinity का जो horizontal differences होता है, जो बेल्ट अलग अलग बनते हैं, ये उसके बेस पे क्वेश्चन है.
ये एक बहुत बड़ा रीजन, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म थर्मोहेलिक सर्कुलेशन का क्या है कि इन द अर्थ जो भी है उसका मैकेनिज्म, हमें अभी क्या पार्ट का एड्रेस करना है, मैकेनिज्म को, राइट। इलस्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ थर्मल सर्कुलेशन अक्रॉस द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, अच्छा फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बताना है। So you have to write the mechanism. What is the mechanism that should be followed to the formation of the thermohaline circulation? The polar region what get very cold, forming ice as a consequence. Surroundings suffer salty air because when the sea ice form, the salt is left behind. Water का अगर ice बन जाएगा तो salt रह जाएगा पीछे. So it gets salty, density get increased, it start to sink. जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे सिंक होगा. सरफेस वाटर इज पुल्ड अप इन द रिप्लेस द सिंकिंग वाटर. सरफेस वाटर ऊपर आता है, रिप्लेस करता है सिंकिंग को. इवेंचुअली टर्न्स बिकम कोल्ड एंड सॉल्टी एंड इनफ फॉर स्विमिंग. सो यू विल रीड, काइंडली रीड अबाउट दिस टॉपिक एंड देन यू शुड एड्रेस इट प्रॉपर्ली. ओके, जैसे कि ये डायग्राम में आप देखें कि अलग अलग उसका अलग अलग बना हुआ है, ठीक है. एक वार्म वाटर का अलग बनता है, कोल्ड वाटर का. तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं. So that was one tricky question that we have given in this entire paper one, test one. Now, the last question for the test one. Do you agree that the plastic has proved to be bane for the environmental health? Given argument. Now, this is an analytical question. We have given two analytical questions in the entire question, entire 20 question. दो ही है, पीछे एक analytical question हमने 1 to 10 में दिया था और एक 11 से 20 के बीच में हमने एक और दिया, ठीक है. और दैट इज रिलेटेड टू प्लास्टिक. इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, सब जानते हैं इसके बारे में. आपको प्लास्टिक, simply start with the plastic. There's a two, but there is only one question. Do you agree that plastic has proved to be bane for the environmental health? Give argument. ये बेन है या नहीं है? बेन है तो आर्ग्यूमेंट दो, बस इतना पूछा है उसने. बेन नहीं तो उसके छोटी सी चीज बता दो कि ये बेन नहीं भी है, ठीक है. तो स्टार्ट विद द एक्सप्लेनिंग व्हाट इज प्लास्टिक, देन मूव टूवर्ड्स इनसेपरेबल, कैसे वो प्लास्टिक बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है ह्यूमन लाइफ, ठीक है. आपको बेसिकली ये बताना है कि बेन कैसे है. द ग्रोथ इज द यूज ऑफ द, कुछ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होंगी इसके लिए, तभी वो कॉन्स्टेंटली यूज में है. तो उस बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज के बारे में आप दो चार, तीन चार पॉइंट बताइए. अब ये रैपिड यूज जो हुआ ओवर टाइम, ये कैसे एक तरीके से एनवायरमेंटल हेल्थ इशू बन गया हमारे लिए, ठीक है. तो ज्यादातर प्लास्टिक क्या हुआ, नॉन डिग्रेडेबल हो गया. मरीन लाइफ जो है, टेरेस्टेरियल लाइफ, इवन ह्यूमन को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है. माइक्रो बीट्स प्लास्टिक जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, वो इट गोज इनटू द रिवर बेड्स, फिर वो वही फिश कंज्यूम कर रहे हैं या प्लांट्स में वही चीजें आ रही हैं, तो वो वी आर अगेन कंज्यूमिंग दैट. वो भी ह्यूमन लाइफ पे भी थ्रेट है उससे, ठीक है. डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ द अर्थ सरफेस का है, पॉइजनस सब्सटेंस है, मतलब उनकी डिकेइंग नहीं होती है, तो बहुत बड़ा ये इशू है इसके लिए. प्लास्टिक डेबरीज बनते चले जा रही है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से, ठीक है. So these are the things that you can write in. So in the initial part, we have talked about some of the good part of the plastic. Then we have talked about the bad part of the plastic, and eventually we are concluding that there is no silver bullet for solving the world plastic problem. कोई single bullet वो नहीं है, ठीक है. Government must address the regulation of the plastic item on both the national and sub-national level, ठीक है. तो एक कलेक्टिव एफर्ट के बारे में बात हो रही है. ऑल्दो अभी हमारे पास में हम इसके अंदर आप एक पार्ट लिख सकते थे कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे, कैसे इंडिविजुअल लेवल पे, कैसे कम्युनिटी लेवल पे और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्लास्टिक पे कैसे जो है, प्लास्टिक पे जो चैलेंजेस है हमारे प्लास्टिक को लेकर, यूज ऑफ प्लास्टिक, वो कैसे है. जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन किया, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई टोटल, ठीक है. तो हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन ऑन दैट, वर्ल्ड लेवल पे कैसा एक्शन हो रहा है, कम्युनिटी लेवल पे क्या हो रहा है, अवेयरनेस का क्या प्रॉब्लम है. तो दिस पार्ट इज नॉट देयर इन द मॉडल आंसर, बट दिस पार्ट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर, दैट हाउ द गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज आर टैकलिंग अबाउट. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो मतलब लोग बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं रहे. द पीपल, द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज आर डूइंग, but we are not getting the optimum result. So this is 20 question that we have discussed on this one, on the first test.
test 1, and now I'll take the question one by one. Okay, if there is some question in the student. Okay, so it's okay to add the points of the criticism in the conclusion. Actually, I have given the answer on this. Okay. Okay, Mayank, you have certain question, I guess. You can ask your question. Mayank. Masha Chaudhary. Masha Chaudhary, she has written a very good. She has attempted all the 20 questions in the first test, and that was literally very good. Yeah, Masha, you can unmute yourself. सर यूडी सर हम लोग अनम्यूट अलाउ कर रहे हैं? मेरे ख्याल से शायद माशा आप अनम्यूट कर सकते हैं या आप अपना मैसेज टाइप कर दें. डेली क्लास 2 to 4 PM कब शुरू होगी? डेली क्लास 2 to 4 PM कौन सी क्लास? मेंस टेस्ट सीरीज की? Thank you, sir. हाँ हाँ माशा, हाँ ओके, यू हैव गिवन आंसर. 1 minute. और क्या तरीका है सर एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का? जितना बोला है उतना ही कर लो भाई पहले. ठीक है, आई गेस इतना भी कर लोगे तो बहुत है. कोई पीएचडी तो करना नहीं है सर को तारीफ करने के लिए, मतलब सर की तारीफ के लिए. ठीक है, तो आई गेस जितना मैंने बताया है उतना ही कर जाओ, बहुत ज़्यादा है वो, तो उतना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है. ओके सर, दूसरा क्वेश्चन है कि धनेश्वर का, सर डेली क्लास 2 to 4 PM कब शुरू होगी मेंस टेस्ट की? मेंस टेस्ट की क्लास, आई मीन टेस्ट की क्लास क्यों? यू माइट बी टॉकिंग अबाउट द एनरिचमेंट प्रोग्राम ना, दैट विल स्टार्ट आफ्टर प्रीलिम्स. Dhaneshwar, that will start after prelims. वो 2 to 4 तभी होती है, प्रीलिम्स के बाद है मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो इस टेस्ट सीरीज के साथ में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो 2 to 4 वो तभी स्टार्ट होगी. ओके अनमोल, शी इज फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड दिस मॉडल आंसर? इज इट saying not you? आपको जो टेस्ट वाला है ना सेक्शन, आपका टेस्ट का सेक्शन जो है. ओके अनमोल, अमोल, सॉरी अमोल, आपके टेस्ट के सेक्शन में आप अपना पेपर अपलोड करते हैं, जहाँ डाउनलोड करते हैं वहीं पे पुणे में आपके उसमें होगा मॉडल शीट आंसर. Sorry, we do not provide the hard copy of the model answer. Sir, will you provide the hard copy of this question paper with the model answer? No, model answer का PDF मिलेगा आपको सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी. क्वेश्चन पेपर तो आपको दिया हुआ है सर. सर बट वहाँ पर अपलोड नहीं है आई गेस. लेट मी चेक वंस अगेन अनमोल, I'll revert you back on this. मैं अपलोड करवा दूंगा उसको आज. ठीक है सर, टेस्ट 2 में टेस्ट 1 के तरह क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं है. क्वेश्चन तब में मेंस बुकलेट वाली PDF है. प्लीज अपलोड ओनली द क्वेश्चन एंड नॉट द आंसर बुकलेट. आई एम सॉरी, वी कैन नॉट डू दैट. ओके, दैट इज आवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, दैट विल बी देयर. अभी ये कर देते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो टेस्ट बुकलेट के साथ में लास्ट में ना क्वेश्चन पेपर भी ऐड करवा देंगे उसमें. ठीक है, तो वो आपका बुकलेट जो QCA का बुकलेट होता है, उसके साथ साथ में आपके जो नीचे लास्ट में दो दो पेज में आपके जो पूरे जो 20 क्वेश्चन है वो ऐड करवा देंगे. आपको अगर नहीं चाहिए पूरा QCA डाउनलोड करना नहीं है आपको, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड ओनली दैट पार्ट. खाली वो 2 पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप. ठीक है, किसका क्वेश्चन था? रूपशा. ओके रूपशा, ठीक है, वो मैं ऐड करवा दूंगा अगले. मैं टेस्ट 3 4 3 तो चला गया, 4 से करवाता हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, 4 से विल डू दैट. ठीक है, एनीबडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू? कैसा लगा आप लोगों को दिस टेस्ट डिस्कशन? अभी हमने कोई ग्रुप बनाया नहीं है मेंस के टेस्ट का, अलग से बनेगा ग्रुप, विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. ठीक है, अभी
अभी थोड़े दिन के बाद में उसे बनाएंगे। अभी 2 टेस्ट फ्री है तो उसको हमने अलग साइड किया है। 1 वीक के बाद में आपको एक सिंगल ग्रुप में डाला जाएगा जिसमें आपको सिंगल इंडिविजुअल मैसेज मिलेगा आपको। Anybody else have any question? So shall we add the map of India in question number 12? What was the question number 12? Write it once again. Question number 12 क्या था? Related to what was the question number 12? Somebody tell me. एक मिनट रुको. Let me check. Question number 12. मैप ज्योग्राफी में क्या सोचना है? मैप बना दो. There is no problem in making a map. वो तो अच्छा एनरिचिंग पार्ट है वो. क्या क्वेश्चन? बे ऑफ बंगाल. यस, यू कैन ड्रॉ मैप. देयर इज नो प्रॉब्लम. सदर्न पार्ट का मैप बनाओ. पेनिनसुला का आधा ही मैप बनाओ चाहिए तो पेनिनसुला का. लेकिन आप दिखा सकते हैं कि ज्यादा साइक्लोन आते हैं या रिसेंट कोई साइक्लोन आपको याद होगा तो उसी का नाम बता दो वहाँ पे. इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, दैट यू कैन ड्रॉ. इंडिया का क्वेश्चन है, मैप भी नहीं बना सकते. ज्योग्राफी क्वेश्चन है. ठीक है, नो इशू. बना सकते हैं आप मैप. हाँ हाँ, ठीक है. बे ऑफ बंगाल. Okay. Anybody have any more question? So we will be conducting this discussion. अभी uh, एक डिस्कशन तो मैंने लिया है. अभी कोई और सर आएगा जो उसमें पेपर 2 का तो मैं खुद लूंगा. टेस्ट 2 का. टेस्ट 2 इज पॉलिटी, राइट? So that will I'll take the discussion. And please keep this class more interactive. तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग. UD sir. जी सर. हाँ सर. I guess we are done with the test 1 discussion. And कूल सर. अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर अगर कर दें एंड हाँ. थोड़ा इस टेस्ट के बारे में अगर बात कर दें तो थोड़ा अच्छा होगा. कौन सा टेस्ट? मतलब अबाउट दिस प्रोग्राम एज अ टेस्ट सीरीज सर. हाँ, टेस्ट सीरीज, राइट? Sure, sure. Okay. So you can share the screen with हाँ बस IQRA's just website. हाँ just I'm just doing that only. थोड़ा सा PC कभी कभी स्लो हो जाता है. Okay, so you can see my screen now. So Yes we sir. are so this is mains test series. We are launching. We have launched mains test series, and after 2 tests, now it will be a paid one. So mains test series 2023 we're talking about. And if you see in the mains 2022, we are able to claim, right? And that claim is from 13 paper. That claim is from 13 paper. Only 13 paper we have conducted for mains 2023. And in that 13 paper, out of 76 question, 74 question approximately, 76 questions somewhere around, we were able to target 27 question in 2022 mains paper. Now this is a very different achievement as compared to anybody. And we were able to, this is our success result, right? This is our success rate. You can see this. You see this? You see this? 27 question. You can download this, which are the question we have done, which are the question that has came in our from our test series in the UPSC examination. So we are not like an ordinary test that we are doing. We are more focusing on the how the UPSC will think and how we are going to deliver. तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं. तो हमारा फोकस एक्चुअली में ये नहीं कि हमने 50 टेस्ट बना दिया उसमें से हमारे 5 क्वेश्चन आ गए. हमने 13 ही टेस्ट बनाए. We were so qualitatively enriched, we are able to target 27 questions in total. Now, is it visible to all? Yes sir. Okay. General studies mains. Okay. We have contemporary issues plus static
इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। 19 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया है इसे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, ठीक है। You have already registered for it. The highlight of this part is it is the solution to score 400 plus marks in the GS paper. And any score that is plus 400 is a qualifying score. आप अगर 400 पे पहुंच गए तो ये क्वालिफाइंग स्कोर, ठीक है। It is paid for everyone. This course is paid course. No matter which group you are or which batch you are taken, it is paid for everyone. In this, what we are giving to you, a solution to 400 plus marks. Second, we will be conducting one more class that will start in the month after prelims, immediately after prelims, and it will go up till mains, September mains 2023. In that, we will be taking one exclusive class, and that is mains enrichment program. In that, we will be covering 120 plus topic that is most essential and most predictable topic that can come in the exam. That will be free for you people with this test series. Second, mains test series will be conducted in two phases. First phase is before prelims, another phase is after prelims. The first phase we have begun from 19th of October and it will go up till 19th of March 2023. The second will begin from 18th of June 2023 and that will go up till September 3rd, 2023. Two phase. In the first phase, before prelims, the test series is divided into four level A, B, C, and D. Okay. First two level, that is basic. In this, that currently that is going on. Level A and level B will be, these two level will be, we are discussing. We will be completing before prelims. Level C, that is advanced level, and the mock test level we will be doing after prelims, and that is before mains. In basic level A, what we are doing, we'll test the basic understanding. If you see the question, we have justified this part. We are testing your basic understanding, information, conceptual clarity, and bit analytical approach. थोड़ा सा analytical approach हम आपसे expect कर रहे हैं उसमें. In the level B, this will design to test the student analytical approach in the different subject with significant depth. हम इसमें depth को बढ़ाएंगे analytical approach. And the level C, that is coming after mains, after prelims, not mains, after prelims, that is the advanced level. We will be checking everything in here: language, structure, conceptual clarity, better analytical understanding, strict evaluation parameters will be followed. Okay. Then we have a mock test, like the UPSC have UPSC have a test. You will write one paper, one test in two tests in one day. You will write essay, two tests, and in the continuity of the 3 days, 1st, 2nd, and 3rd September, you will write the 5 paper like you do in the UPSC. Okay. That's we have done. Now, one-to-one discussion with the faculty, और in case evaluation के साथ में आपको करना है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं. प्रीलिम्स से पहले 16 सेक्शनल टेस्ट है, 3 सेक्शनल रिवीजन टेस्ट होगा आपका, 4 फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, ठीक है. इन टोटल 23 टेस्ट विल बी देयर ऑफ जीएस पेपर बिफोर प्रीलिम्स एंड 1 एसए पेपर, ठीक है. देन आफ्टर प्रीलिम्स देयर विल बी 8 सेक्शनल टेस्ट प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, 4 full length tests will be there and 2 essay paper will be there. So that is 12 will be GS paper and 2 your optional, 2 your GS essay paper. In total आपको मिलेगा 23 plus 12 35 test GS and 3 tests of essay, 38 total. The fees for this is exclusively English medium test series. Next is आपको लाइव लेक्चर्स, ऑनलाइन सेशन, रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे. जो अभी हमने डिस्कशन किया उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा. आपका करंट इवेंट का जो डिस्कशन होगा वो भी आपको जनरली हमारे पोर्टल से मिलेगा. देन द फीस फॉर दिस एंटायर थिंग इज 20,000 बट द इनिशियल डिस्काउंट इज 10,000 and 10,000 will be plus GST. That is 11,800 will be the total fee. So do register because after 2 tests
you cannot give 2 free trial हमने रखा है, and after that free trial you will not be allowed to give the test. आप हमारा क्वालिटी देख लीजिए, we have given the best quality. आप आंसर्स देखिए, मॉडल आंसर देखिए, one of the best model answer we have designed for you people. The question we are not asking you, we have what we have promised you, that only we are doing. We in the level 1 we have told you that we'll ask the basic question, we are asking you basic question. It's not for the sake of asking the question we are making any question for you people. No, we are not doing that, because we want you to prepare in a systematic way. That's it. So all the best, do join, get the benefit from our courses, from our efforts. Sir, thank you very much, students. UD sir. UD sir. And also we have launched political science optional subject, and Sanjay Thakur sir is taking lecture. Today was the first lecture. Those who are interested, they can also opt for political science optional as well along with this. Okay. So thank you very much, and we'll see you soon in the next test. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your time. And all the students who have joined us on YouTube or Facebook or on Zoom, I hope it was a very enriching experience for you. We'll have one more session like this, and there'll be another one wherein, as sir said, he'll be discussing mainly about talking in terms of writing mains answers. So wherein how, what, enumerate, or the various the keywords which are used in the questions. That will be. So would you like to add something right in the end? We'll definitely we'll discuss with the let the pace move. Okay. Let the small pace. We'll take a step. Don't try to digest everything in one day. That is never going to happen, right? You will vomit. So we'll go gradually. Don't worry. The time will come. I'll tell you what that means, what the keywords mean. We'll discuss everything. Don't worry on that part. बच्चों को उससे बहुत डर लगता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, टाइम आने दीजिए। अभी आपका एनालिटिकल अप्रोच हमने बढ़ाया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए उस डायरेक्शन में हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में एनालिटिकल अप्रोच हम बढ़ाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, आई थिंक श्योर सर, थैंक यू सो मच। एंड जैसा सर ने कहा कि आप बेसिक से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, विच मीन्स देयर इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन एंड इट्स अ बिल्ट अप प्रोसेस। जैसा सर भी कहते रहते हैं, ओझा सर भी कहते रहते हैं कि पूरा का पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन जो है इट्स अ बिल्ट अप प्रोसेस। पहले कुछ बेसिक चीज सीख लें, कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो सीख लें, एंड फिर ही उसके साथ यूजेबिलिटी कैसे होती है या मिक्स एंड मैच कैसे होती है तभी पता चलता है। राइट सर? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। So thank you so much, sir, Irshad sir, and thank you students for joining in today. So would you like want to add something? No, thank you very much, and I'm very glad that so many participants were there for the first test, and I see more number of students in the coming time writing for the large number of mains tests, because you have to write mains tests sooner or later. So why not to start early? Because before it becomes too late. So please mark these words, remember these words from my side. Okay. So all the best. We'll see you in the next test. Thank you very much and good night. Take a proper rest. दिवाली खत्म हो गई तो अब थोड़ा सा पढ़ाई के जोन में वापस आओ सब लोग। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू सून। Thank you, sir. Have a Bye. good night. All the students have a good night. Take care. एंड जितने भी बच्चे हैं जो नए से ज्वाइन किए हैं या किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमें, kindly do get in touch with us if you have any kind of doubt, and we'll be love to solve all those doubts with you. ठीक है, सो जब भी कभी आपको लगे कि क्या करना है, कैसे करना है, एक तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं www.iqras.com, एंड वहाँ पे जितने भी नए कोर्सेज हैं हमारे, जीएस के हों, ऑप्शनल के हों या टेस्ट सीरीज के हों, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस ऑन टेलीग्राम, एंड देर आर ऑलवेज mentors dedicated in each of the locations,
Many of the students who are in online can directly get in touch with me. My name is UD. You can search for me. So thank you so much and have a good night ahead.